낙타들의 대이동이 시작됐습니다. 수백 킬로미터의 사막을 횡단해야 하는 길고 긴 여정입니다. ऊँट को पिला दिया नहीं पानी वाह बटे वाह खेड़ बरी जटे पिला दिया 갈증을 축이고 나면 길은 다시 시작됩니다. 이들의 행렬은 지금 인도의 고대 도시 푸시카르로 향하고 있습니다. 인도 라자스탄주에 있는 푸시카르입니다. 작은 시골 마을인 이곳은 11월이 되면 낙타의 도시로 바뀌죠. 바로 1년에 단 한 번 열리는 낙타 시장이 서기 때문인데요. 인도 전 지역에서 낙타들이 몰려옵니다. 사막의 배라 불리는 낙타지만 수백 킬로미터의 여정은 그들에게도 꽤나 고됐을 겁니다. 다들 허기를 채우기 바쁜 가운데 이 녀석은 그마저도 귀찮은 모양이네요. 숨고를 틈도 없이 주인은 낙타들의 발을 묶습니다. 행여 도망가는 걸 막기 위해서죠. राम राम शाह राम 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 कितने जानवर लेके आए? लाया नहीं 40-45 जानवर है। कितना दिन लगा आपको आने में? 11-12 रोज लगे। आज से ये पांचम से स्टार्ट होते हैं जब उसका जैसे पूनम तक रहते हैं। एड्रेस पता क्या? अब तो थोड़ा जल्दी निपट जाते, पहले पूनम के दिन सारा माल बाहर निकलता था। 매년 11월 보름이 되면 서서히 모여드는 상인들과 낙타들. 매년 이곳을 찾는 낙타의 수만 5만여 마리가 넘으니 명실공히 세계 최고의 낙타 시장입니다. ओ भैया इसमें क्या क्या लेके आए हैं? आटा है, आटा रोटी बनाने का और ये ओढ़ने का क्या घुमा दे या में खुआ देते हैं। कांटा ही लग जाता है, फूट ही जाता है। कितने साल से आप यहाँ आ रहे हैं? गुजर के बातें गुजर गए, दिन हो गए, बहुत दिन हो गया। हमारा बाप बूढ़ा भी मर गया। 14 पीढ़ी 14 पीढ़ी तो हमने देख ली। कौन कौन आपके क्या लगते हैं जरा बताइए हम। बेटे ये बेटा ये बेटा ये बेटा वो पोता और ये भाई है। किस जात क्या नाम है आप लोगों का? ये ऊंट वाला रेबारी रेबारी ये ऊँट वाले रेबारी चौधरी 수백 마리의 낙타를 가진 레바리 계급은 대대로 가업을 물려받습니다. 푸시카르는 본래 인구 2만여 명의 조용한 마을인데요. 하지만 낙타 시장이 열릴 즈음엔 20-30만 명이 모여드는 거대한 축제 도시로 변해요. 마을 안 시장에서도 모처럼 활기가 돌면서 상인들은 장사할 맛이 납니다. What is this? 마을 전체가 낙타 시장의 특수를 톡톡히 누리는 셈이죠.
그 옛날 시골 마을에 서커스 유랑단이 돌듯 이곳에도 한 유랑극단이 찾아온 모양입니다. 낙타 상인을 겨냥한 장신구 가게도 열렸습니다. 프랑스 튀인데? 멀리서 보니까 이쁜데 가까이서 보니까 약간 허접해. ये माला है माला गले की हाँ इसके लिए ऊंट घोड़ा इसके मतलब बैल बकरी ऊंट घोड़ा सब काम आती है 낙타 시장이 열리기 전 푸시카르는 대체 어떤 모습일까요? 꼬리도 길다. 답은 저 꼭대기 사원에 있습니다. 나마스테. 나마스테. 하루에도 수많은 힌두교 순례자들이 이 산을 오르내리는데요. 푸시카르는 인도에서도 힌두교 3대 신의 하나인 브라흐마의 유일한 사원이 있는 곳입니다. 순례자들은 브라흐마와 부인의 사원을 돌면서 기도를 올립니다. 그 옛날부터 저 호수는 이곳을 방문하는 이들의 소중한 오아시스였을 겁니다. 이게 물이 굉장히 소중하겠죠, 이 사람들한테. 저걸로 이제 그리고 저게 이제 되게 성스러운 물이라고 하니까 그거 위주로 마을도 생기고 이렇게 낙타패 멀리서 이제 낙타를 팔고 사려고 이제 시장으로 모이는 거죠, 사람들이 여기. 아마도 그랬을 것 같아요. 인도의 가장 오래된 도시 중에 하나인 이곳이 사막의 성지가 된 데엔 이 푸시카르 호수가 있습니다. 창조의 신 브라흐마가 악마와 싸우던 중에 연꽃을 떨어뜨렸는데 그곳에서 호수가 만들어졌다는 전설이 있습니다. (11월) 보름에는 브라흐마 신의 기운이 더 강해진다고 믿어서 호수는 축복을 구하는 순례자들로 넘쳐납니다. 호수 한 바퀴를 돌면 복을 받을 수 있다, 이런 말에 저도 열심히 걸어봤습니다. हिंदुओं का तीर्थ यही माना गया है और खादिमों का मुसलमानों की दरगाह मानी गई है। पिताजी के पास में आना पड़ेगा। जब बोला कलयुगम गंगा पूजम सतयुगम पिता भूलम, इस सतयुग में यहाँ आप चाराने देंगे, पंडित राजी हो जाएंगे, आप हरिद्वार जाएंगे। 호수의 전설이 다소 허황되긴 한데 마을의 기운을 불어넣는 건 확실해 보입니다. 그날 저녁, 현지 코디네이터의 지인이 있다는 한 사원을 찾았습니다. 아버지예요. 부인 아버지. छठ मातेश्वर का दिन है। छठ कात्यायनी माता का मंदिर है। अच्छा, आज इनका दिन है, इनकी जन्म तिथि है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ? ये 56 भोग भगवान के लग रहे अन्नकूट। 명절에는 사람들과 음식을 나누는 것이 이곳 사원의 전통. 그 옛날 사원을 방문하던 낙타 상인들에게도 이렇듯 융숭한 대접을 해줬다고 하네요. 제사상에 올려놓은 음식은 모두 56가지. 숫자 56을 상서로운 숫자로 여기기 때문에 꼭 가지수를 맞춰서 제사를 지냅니다. इसका और इससे
पे क्या ऐसा है कि पुष्कर मेला होता है तो इसमें पुष्कर राज्य का तीर्थ का स्नान भी होता है और जो यात्री लोग आते हैं हमारे मारवाड़ से उनके पास में ऊँट घोड़े बैल होते हैं वो एक पंथ और दो कामों से अपने देश के जाते हैं यहाँ से बेच भी देते हैं और पुष्कर राज्य की यात्रा भी करते हैं। 진짜 맛있어. 카레가 맛있다. 매워. 그리고 신기도하고 나오는 음식이에요. 무조건 맛이 있어요. 어때요? 음식이 어때요? 음식이 약간 과자 같은데? 약간 과자 같아요. 쌀쌀한 사막의 아침이 밝았습니다. 상인들은 낙타 저주로 만든 짜이차를 마시면서 차가운 몸을 덮입니다. 남람. 이겼어? ये मेरे मामे है भाई है और कोई भतीज है यही भांजे है। कितने जानवर लेके आए? 45। Thank you much. 뭐야? 1, 2, 3. Very handsome. Good. Is it good? Oh. कितनी बार आए थे? 2-3 बार। 2-3 बार। पहली बार कितने साल में आए थे? हैं? पहली बार कितने साल में? 5। मम्मी को याद नहीं आती? आती है। आती है। नहीं मम्मी तो याद नहीं की आती है ये खाने आवे। ये पूछ रहा तुम यहाँ आए तुम्हारे 8살 꼬마가 오히려 어른들을 걱정해주네요. 아버지의 뒤를 이어서 낙타 상인이 돼야 하는 아이들은 벌써 이런 생활이 익숙한 듯 보입니다. 아침 식사가 끝나면 바로 흥정이 시작되죠. रुपए देने ही है क्या बात है पर्ची दोगे ना दोगे अरे भाई बस पर्ची तो दोगे ना दोगे इसके लागे की पहले बात तो खुंटा पर्ची अब तेरे पास आराम है तू खुंटा पर्ची लेकर आ जा ले पकड़ तो ले झंडू रुपए 낙타 몸에 표식을 하는 걸 보니까 거래가 성사된 듯하네요. 그러나 정작 낙타 판 사람은 가격이 썩 마음에 들지 않는 모양입니다. 낙타를 사러 온 이들은 매 눈으로 시장을 훑습니다. 걸렸다 하면 바로 돌진입니다. इसका बोलो। इनका 16,000 है। इसका 16,000। 16,000 है बाबा। इस तरह नहीं बैठती तो क्या इसके पैर के वहाँ लगी हुई है? लगी हुई तो हो जाती हो। इसका 15,000। इसका बाबा ने बोल रहा 15,000 का ये माल नहीं है। ये माल तो 10,000 का ही है। इतना तो लेंगा तो पूरा ही लाएंगा। थोड़ा था तो फेर फार करना ही पड़े। अच्छा ऊँट कैसे आप लोग पता करते हैं? अच्छा ऊँट जो कोई खोड़ खबार नहीं होती है, अच्छी नस्ल होती, कान एकदम तीखा होता, मुंह छोटा होता, पैर गट्टा पैर बिल्कुल सही होता, वो ऊँट अच्छा। 사막을 점령한 낙타 시장은 신기하게도 요란스럽지가 않습니다. 모든 낙타의 거래는 있는 듯 없는 듯 조용히 이루어져요. 물론 그 속엔 낙타를 좋은 가격에 팔려는 숨은 노력들도 있긴 하죠. 과감히 돈을 투자해서 털을 밀기도 합니다.
जैसे अपन डैडी है ना, इसको बनाएंगे तो अच्छे लगेंगे ना, ऐसे ही अच्छा लगेगा। 이 사람은 낙타 전문 이발사입니다. ये आपके बाल बनाने वाले लोग एक ही जाति के हैं? हाँ। कौन सी जाति? खटीक। खटीक। एक ऊँट का काटने में बाल कितना पैसा लेते हो? 250 रुपये। 250। 어우. 어우, 무서워, 왠지. 칼인데, 이거. One more. Thank you. 아, 나 안 되겠는데? Sorry. 상처가 날까봐, 피부에 상처가 날까봐 무서웠는데 굉장히 두꺼운 것 같아, 가죽 자체가. 이렇게 고양이 털 같은 거 자르면 피부가 되게 얇거든요. 얘는 가죽이 느낌이 육중해가지고 이게 잘 안 돼요. 시장이 열리는 동안 탈이 나는 낙타도 적지 않습니다. ये भी बिकता था, बुखार आ गया अभी, ये भी बिकता था। ये सुबह बुखार हम उतर जाएंगे, बिक जाएगी। जो टट्टी कर रही है? हाँ, ट्रेन से मैं गाड़ी के अंदर लाया नहीं, इसलिए मैं भीड़े भाड़े से इसकी बुखार भी सड़ गया। ट्रेन से लाए कि गाड़ी ट्रक से लाए? 장거리 여행의 낙타도 스트레스가 컸나 봅니다. 고민 끝에 마을에 차려진 임시 동물병원을 찾았습니다. कैसे आवाज़ कर रहा है क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल, आप इतनी सी काबुल मेल में बैठ जाएगी। पैरासिटिक ही होती है ना, पैरासाइट्स की वजह से सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम वो है पैरासाइट्स। 낙타가 건강해야 좋은 가격에 팔 수 있으니 시장에 수의사가 없으면 정말 큰일 날 일입니다. ऊँट की उम्र तो 25 साल 20 प्लस। सेवा माता है, बढ़िया सेवा। 20 से ऊपर होती है, डिपेंड करता है। अगर आप इसका न्यूट्रिशन वगैरह बढ़िया ऊँट होता है ना, 25 साल के होते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर है, रख रखाव अच्छा है, मैनेजमेंटल प्रॉब्लम सही है, तो 25, 26, 23 तक भी जाएगा। यहाँ पुष्कर मेले में कितने सालों से आप देखते हैं? पुष्कर मेले में तो हमारी जॉब तो कहीं और है, यहाँ तो खाली बस पुष्कर मेले में ड्यूटी लगती है। साल में आते हैं? एक बार आते हैं। 낙타 시장으로 큰 수입을 올리는 수의사들만큼이나 이때를 놓치지 않는 이들이 또 있습니다. 바로 낙타똥을 줍는 이들인데요. 주로 마을 아녀자들과 아이들이 몰려듭니다. फिर मैं क्यों चुगा? रुक तो सही है कि चुकेगा, आंधी की जान के चुका दे। अब आलू चुगा दे, कौन क्या मैं चुग बोला? काय चुके ने चुका। 볕에 말리면 좋은 연료가 되고 중간 상인에게 팔면 돈이 생기니까 짭짤한 소일거리인 셈입니다. इसको खाना बनाने में कैसे आग लगाने के लिए डालते हैं? आग लगाने के लिए देते, चूल्हे के अंदर देते हैं। चूल्हे के अंदर देते हैं। तो आप लोग रोज कलेक्ट करने आते हो? नहीं, ये मेले के अंदर ही होता है कलेक्ट, मेले के अंदर ही चुपते हैं। पूरे साल भर के लिए? हाँ, नहीं साल भर का होता है तो होता है, नहीं तो 2-3 महीने के लिए होता है। 오후가 되면 일부 상인들은 낙타를 데리고 근처 사막으로 이동합니다. 사료 부담도 덜고 신선한 먹이를 먹이기 위해서죠. 가시가 달린 걸 먹네. 어우, 바늘인데 바늘. 와, 이거 어떻게 먹지? 야. 시장이 자리한 타르 사막에서 멀지 않은 곳곳엔 낙타 먹이가 되는 버블나무가 많이 자랍니다. 낙타를 끌고 움직이는 이들은 대부분 유목민 출신의 낙타 상인들입니다. 낙타의 수도 많지 않은 편이죠.
जानवरों को वहाँ मेले में भी तो खाना मिलता है, खाना खरीद के खिला सकते हैं, क्यों यहाँ लेके आए? खाना इतो ने में कटे खाना मोल ले तो कटे इतो कौन पहुंचावे खाना इतो के नहीं मिले खाना मोल. 낙타 몰입꾼에서 어엿한 낙타 상인이 됐지만 아직도 갈 길이 멉니다. दूध हुआ और कुछ चीजें घर में काम लेते हैं, दूध बकता है, हल करता है, चकड़े आलता है. नहीं जंगल में, अच्छे जंगल है, जंगल में ही चराते, जंगल में ही रहते हैं हम लोग ऐसी जमीन में. आपको किस जाति के हैं? रईका. हाँ, क्या बिजनेस नहीं करते, ये बकता है मेला में जो बेचता है वो. 12 महीना से मेला आता है और मेला में बेचता है, बस बके तो बेचा नहीं, बेच के पास जाऊँ बस. वो बिजनेस पूछ कर रहे. आपके बच्चे लोग भी ये काम करना चाहते हैं? नहीं चाहते. बच्चा नहीं करना चाहते. ये तो बकरा भी नहीं है, बच्चा क्या खावे. 그래도 매년 낙타도 늘어가고 밑에 직원도 늘어가니까 조금씩 나아지고 있는 거겠죠? 사막에서의 소박한 저녁 시간입니다. 이동하며 사는 게 일이니까 식사도 늘 단촐합니다. 낙타 젖으로 만든 짜이에 거친 밀가루로 만든 빵만 있으면 어디서든 든든히 속을 채울 수 있습니다. 사막은 가진 것이 적을수록 더 누릴 것이 많아지는 마법의 공간 같습니다. 어때요? 맛있어. 미차해. 미ठा해. 미타해. मेला में 9 बजे 9 बजे उधर टाइम खाना बनाएगी. बंदे ने खाना बनाई ने बेओ बजे आए कोई लेवार तो व्यापारी आए, उन्होंने बताओ माल फंसो गए, वो बिको. चाय पियो, कितना पैसा लो, कितना दे. हमें पकड़ा वो गए दो. I'll be fine. Just give me time. 어떤 성냥불 하나조차도 보이지 않는 그렇게 어두운 곳에서 사람들이 낙타를 모으고 풀어놨다 모으고를 반복하면서 차를 끓여 먹고 식사를 하고, 그리고 거기 바닥을 모래를 정리하고서 거기 누워서 자고요. 이게 자신들은 그냥 그렇게 받아들이고 고생스럽게 살지만 그렇게 불행해 보이지도 않고요. 그런 게 참, 이게 뭐랄까, 보면 볼수록 좀 이해할 수 없는. 낙타 시장이 100여 년을 넘게 이어오는 동안 낙타 축제도 자연스럽게 한 자리를 잡았습니다. 도심에서는 볼 수 없는 사막의 독특한 문화가 입소문을 타면서 인도의 대표 축제 중에 하나가 됐죠. 어딜 가나 주인공은 낙타지만 이 낙타는 단연 눈에 띄네요. 카펫에다가 담요에다가 이 장식에다가 얼마나 아가씨보다 이쁘네요. कि जब भी लवाजमा निकलता था तो ऊंट, हाथी और घोड़े सजा के और पूरा लवाजमा के रूप में निकालते थे. 낙타가 화려할수록 주인의 어깨가 올라가는 건 예나 지금이나 마찬가지인가 봅니다. 축제에 모인 사람들에게 가장 인기 있는 순서는 낙타 댄스 대회. 사실 펄쩍펄쩍 뛰는 춤솜씨보다는 주인과 호흡이 얼마나 잘 맞는지가 심사의 포인트랍니다. 그 사이에 낙타 상인들은 슬슬 떠날 준비를 합니다. पहले जैसे बाजार था यहाँ पर, पहले आप लोग आते थे, इस बार के बाजार की क्या स्थिति है, कैसा रहा बाजार? मंदा है ना, मंदा है इस बार मंदा है बिल्कुल. ऐसा पहले तो यहाँ पर कहीं घूमने फिरने की जगह नहीं मिलती थी,
ऊँट का दाम आपको ठीक नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा ना, 0 पॉइंट। अब जैसे 10,000 20,000 का बच्चा है, उसको 4,000 3,000 5,000। अब हमारी फैमिली तो इन पे ही बैठी है, उनको कैसे गुजराएंगे? 사막에서도 낙타를 대신해서 탈 것들이 늘어나니까 낙타에 대한 수요가 계속 줄어드는 것이겠죠. क्या करके आए आपकी हम ऐसे आए हैं कि हमारे पशु अच्छे बिकाए, बिक्री अच्छी होए, इस बार हमारे को अच्छी कमाई देंगे और बार बार आते रहेंगे। 그들의 간절한 기도가 꼭 이루어지면 좋겠네요. 시장이 파하고 상인과 팔리지 않은 낙타들이 되돌아갑니다. 또다시 수백 킬로미터의 고달픈 여정. 하지만 그들은 내년에 다시 올 겁니다. 지난 1세기가 넘게 그래왔단 말이죠.